Hello students, hope you are all fine and taking good care of yourself. Students, in the last video we discussed about the harmful microorganism. In that we discussed about the disease which is caused by microorganisms in human beings, plants and animals. But before that we discuss about the terms, that is what do you mean by pathogens. Students, pathogens are the microorganisms that causes disease in human beings, animals and plants. Then these pathogens can enter the body of a healthy person through air, water and food. After that, we discuss about communicable disease. What are communicable diseases? The disease that can spread from one person to another person are called communicable diseases. We also studied about the communicable disease like malaria, cholera, typhoid, tuberculosis, ringworm, common cold and chickenpox. Their mode of transmission, causative pathogens and preventive measures. Then we discussed the diseases in animals which are caused by pathogens, which were foot and mouth disease, rinderpest, anthrax and fin rot. And in the end we discuss about the various disease that are seen in the plant, such as citrus canker, apple scrub, lost mud and rust of wheat. So I hope the concept of the topic which we discussed in our last video is clear, and also hope that you have gone through the textbook also. Now in this video we are going to discuss about microorganism and the food spoilage. So let's start. Students, these microorganisms such as fungi and bacteria are responsible for the spoilage of food. The condition required for the growth of this microorganism are moderately warm temperature, air and moisture. And this microorganism often produces substance which makes the food stuff unfit for consumption. And students, the eating of such food stuff can cause illness called food poisoning. सो बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो खाने को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं एंड मेक इट अनफिट फॉर ईटिंग. और जो कंडीशन में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वो कौन कौन सी है, तो कि वार्म टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं टेम्परेचर होना चाहिए, हवा और मॉइस्चर प्रेजेंट होनी चाहिए. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे और जो खाना है उसको ख़राब कर देंगे. दैट मीन्स दे विल मेक इट अनफिट फॉर कंजप्शन और यू कैन से ईटिंग. और अगर ये अनफिट फूड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई है वो हम खा लेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय फूड पॉइजनिंग? Microorganism often produces poisonous substance which makes food unfit for consumption. Consumption means khana. And eating such foodstuff can cause an illness called food poisoning. अब हम देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमें पता चलेगा कि ये खाना जो है ख़राब हो गया है या तो वो अनफिट है खाने के लिए बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो फ्यू थिंग्स दैट हेल्प अस to detect food that has become unfit for consumption because of microbial actions are: the first one is foul odor,
मीन्स खाने में से बदबू आने लगती है, ख़राब स्मेल आने लगती है। उसके बाद है सॉर टेस्ट, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। स्लाइमी सरफेस और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द सरफेस। और बच्चों ये कॉटन लाइक ग्रोथ जो है ना, मोस्टली हमें ब्रेड में देखने को मिलती है कि 1-2 दिन के बाद जो है ब्रेड को तुम ऐसे ही बाहर रखोगे फ्रिज के, तो उसके ऊपर वाइट कलर का कॉटन जो लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाएगा और हम कहेंगे कि ये ब्रेड जो है ख़राब हो गई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डीकलराइजेशन ऑफ द सरफेस। मीन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कलर ही जो है ओरिजिनल कलर से पूरा अलग हो जाता है और वो सड़ जाते हैं और उसके बाद हम उसको खा नहीं सकते। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो जिससे हमें पता चलता है कि खाना ख़राब हो गया है और ये अनफिट फॉर कंजप्शन है। सो व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन डिटेक्ट वेदर द फूड इज़ unfit for the consumption? Because of microbial actions are: first, foul odor, slimy surface or cotton like growth on the surface, surface decolorization, sour taste and gas formation। बच्चों अभी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये एक मेजर कॉज है फूड स्पॉइलेज के लिए। ये या तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही खाना जो है ख़राब हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम खाने को जो है ख़राब होने से बचा सकते हैं। या तो उसको हम माइक्रोब्स उसके ऊपर ग्रो ना हो उससे पहले ही माइक्रोब्स को किल कर दें, या तो उनके प्रोडक्शन को जो है प्रिवेंट करें। So we are going to see how we can preserve the food by slowing down the spoilage or stopping down the spoilage of food by the action of microorganism and maintaining the nutritional value, texture and flavor of the food. That is food preservation and different methods of food preservation for different types of food. So students, first of all we are going to discuss about food preservation. What do you mean by food preservation? Food preservation is a process of treating and handling food with an aim to stop or slow down its spoilage while maintaining its nutritional value, texture and flavor. And since microorganisms are one of the major cause of food spoilage, food preservation will involve creating a condition unfavorable for their growth, and the food preservation will kill the microbes or prevent their reproduction. So students, now we are going to see different methods of food preservation. The first one is boiling. Boiling liquid food item can kill any existing microbes. Milk and water are boiled to kill any harmful microbes that may be present in them. तो पहली फूड की प्रिजर्वेशन मेथड जो है वो है बॉइलिंग। अब जब हम कोई भी लिक्विड फूड आइटम को बॉईल करते हैं तो उनके अंदर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो मर जाता है। सो बॉइलिंग हेल्प्स टू किल माइक्रोब्स। Next method to preserve the food is dehydration. Students, dehydration involves removal of water, one of the key requirement for the microbial growth from the food. मीन्स हम कोई भी फूड आइटम्स को सुखा देंगे या तो उनमें से पानी रिमूव कर देंगे
तो भी हम उस फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। उसका एग्जाम्पल जो है सारे सीरियल्स और पल्सेस हैं, गेहूं है, चना है, इनको क्या करते हैं हम लोग सुखा देते हैं सनलाइट में, ताकि उनमें से पानी जो है सब निकल जाए और उनको लंबे समय तक हम यूज़ कर सके। So, I'll explain the dehydration again. Dehydration involves removal of water, one of the key requirement for the microbial growth from food item. Food items such as cereals and pulses are generally dried under the sun to remove the moisture present in them. Next method for preserving the food items is refrigerating and freezing. Students, refrigerating at low temperature and freezing helps to preserve food for longer time because microbes such as bacteria and fungi cannot grow at low temperature. And when fresh fruits, vegetables are frozen, water present in them also freezes. This helps in preventing the microbial reproduction. The food items that can be preserved by freezing include meat and vegetables. तो हम कोई भी फूड आइटम को फ्रीज़ या तो रेफ्रिजरेट करेंगे तो भी जो है हम फूड आइटम्स को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो लो टेम्परेचर में उनकी ग्रोथ जो है नहीं होती है। इसलिए अगर हम फूड आइटम को फ्रिज में रखेंगे या तो उसको डीप फ्रीज में रखेंगे तो उसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। और तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो घर में फ्रिज होता है तो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेके आते हैं तो मम्मी उसमें रख देती है ताकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है फ्रेश रहें। Next method for preserving the food item is canning. Storing food item in airtight cans is an effective way of preserving them. The food items such as jam, vegetables, fish and even cooked food can be canned and sold in a market. Next way to preserve the food is using chemical preservative. But students, first of all, let me explain what do you mean by preservative. Any substance that helps to preserve food or any other item is known as preservative. सो प्रिजर्वेटिव जो है वो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस जो हम फूड या तो अदर रिलेटेड फूड आइटम्स में डालते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है ख़राब नहीं होते. सो substance that helps to preserve food and other item is known as preservative. Many chemicals helps control microbial growth and are used as preservative. The examples of chemical preservatives are sodium benzoate and potassium metabisulfite. And these preservatives are used in sharbat, ketchup and squashes. Next way to preserve the food item is using salt, sugar, oil or vinegar. Students, salt, sugar, oil and vinegar creates an environment that prevents microbial growth and therefore used for preserving food stuff such as pickles, jams, jellies and vegetables also. बच्चों, सॉल्ट, शुगर, ऑयल और विनेगर जो है उसको भी हम यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व द फूड. वाई? बिकॉज दिस आइटम स्टॉप्स द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड वी कैन प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर टाइम. और ये सारी चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व जैम्स, जेलीज़,
पिकल और मीट को। और इसके साथ साथ जब ये इनको हम ऐड करते हैं ना, तो वो फूड आइटम्स में फ्लेवर, स्मेल जो है वो भी इम्पार्ट करते हैं। सो सॉल्ट, शुगर, oil and vinegar creates a environment that prevents the microbial growth, and therefore they are used to preserve the food. Next method for preserving food is pasteurization. Students, pasteurization involves heating a foodstuff to a high temperature and then cooling it rapidly. This helps in destroying harmful microbes without changing the composition, flavor, and nutritive value of the foodstuff. This process is named after a French scientist discovered it in 19th century. And students, commercially available milk is first heated to a high temperature for about half a minute and then cooled rapidly. It is then stored at a temperature lower than 10 degrees Celsius. So these are some common methods of food preservation. So dear students, hope the concepts are clear after seeing the video. I also suggest you to go through the chapter for better understanding. Thank you.